अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 7 के पहले 3 प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स लिए गए हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस 12th एडिशन से, जिनके ऑथर हैं चार्ल्स गिब्सन। ये तीनों प्रॉब्लम्स इन तीनों प्रॉब्लम्स में हमें कैलकुलेट करना है टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो और फिक्स चार्ज कवरेज रेशो। तो हम चलें जी स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम 7-1 से, जिसमें हमें कुछ डेटा गिवन है नेट सेल्स और इसके अलावा कॉस्ट एंड डिडक्शंस में हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है, जिसे हम यूजुअली CGSP कहते हैं, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस गिवन है, इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन है और इनकम टैक्स एक्सपेंस गिवन है। और इन तमाम डिडक्शंस को नेट सेल्स में से डिडक्ट करने के बाद हमारे पास जो है वो नेट इनकम आ जाती है, which is 12,452। साथ में हमें डेप्रिसिएशन की डिटेल भी दी गई है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टोटल्स 40,000। रिक्वायर क्या किया गया है, कंप्यूट द टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो, और सेकंड पे हमें कैलकुलेट करना है कैश बेसिस टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो। चलें जी स्टार्ट करते हैं। टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशो हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। एज वी नो कि टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो का फार्मूला क्या होता है, हमें चाहिए है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब ये अर्निंग हमारी रिकरिंग अर्निंग होगी, नॉन रिकरिंग अर्निंग को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमारा जो है वो भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। ये वो अर्निंग होती है जिसमें हम टैक्स एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड नहीं करते, इक्विटी अर्निंग को ऐड नहीं करते और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को ऐड नहीं करते। अब इस अर्निंग को हम डिवाइड करते हैं किस पे, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे, तो हमारे पास टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो आ जाता है। तो टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो। अब इस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस चाहिए और सेकेंडली हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम वन बाय वन इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये मैं वर्किंग मेंशन कर देती हूँ, यस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को देखें तो हमें सेल्स गिवन है और सेल्स में से ये तमाम डिडक्शंस के बाद हमारे पास नेट इनकम गिवन है, लेकिन हमें वो इनकम चाहिए जिसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्सेस को अभी एक्सक्लूड नहीं किया गया। तो ये इसके दो तरीके हैं, आप दो तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका पहला मेथड क्या है, पहले मेथड में हम क्या करेंगे, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करेंगे और दूसरा सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस को माइनस करेंगे, तो हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ जाती है। सेल्स हमारे पास कितनी है, यस, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हमारे पास क्या हुआ, सेल्स की वैल्यू ये हमारे पास गिवन है 10,79,143। इसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स को, वो कितना है हमारे पास 7,92,755। इसमें से हम माइनस करेंगे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस 2,64,566। तो हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ जाएगा। तो ये हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितना आ गया, ये आ जाता है 2,18,022। अब दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, EBIT कैलकुलेट करने का, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के। अगर हम इस नेट इनकम में से क्या करें, नेट इनकम में ऐड बैक कर दें टैक्स एक्सपेंस को और इंटरेस्ट एक्सपेंस को, इनकम टैक्सेस प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसको अगर हम ऐड बैक कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, EBIT आ जाएगी। नेट इनकम कितनी है 12,452। इसमें हम ऐड बैक करेंगे इनकम टैक्स को 5059
और ऐड बैक करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस को 4311, तो ये भी हमारे पास 21,822 आ जाएगा। तो ये हमने EBIT कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हमें दूसरी क्या चीज चाहिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमें गिवन है 4311। तो अब हम क्या करेंगे, इस रेशो में ऐड करेंगे। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हमने कैलकुलेट किया, जो कितना है 21,822। इसको हम डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस पे 4311। तो ये हमारे पास जो है टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो आ जाएगी, विच इज इक्वल टू 5.06 टाइम्स। तो ये हमने टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो कैलकुलेट कर ली। ये ए पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं कैश बेसिस टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो। कैश बेसिस टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड, ये हमारा किसके इक्वल है। अब ये हमें कैश बेसिस पे चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गिवन है, हमें सिर्फ इस एक नॉन कैश एक्सपेंस की डिटेल गिवन है, विच इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो हम यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज द ओनली वन नॉन कैश एक्सपेंस इन दिस सिनेरियो। तो हम कैश बेसिस टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, EBIT में हम ऐड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, और फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे किस पे, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे। तो कैश बेसिस टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशो किसके इक्वल आ गई, EBIT हमने कैलकुलेट किया था 21,822। इसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे जो हमें 40,000 गिवन है, और इस के अमाउंट को हम डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस पे, जो कितना है हमारे पास 4311। तो हमारे पास ये रेशो आ जाती है 14.34 टाइम। दिस इज द कैश बेसिस टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशो। तो ये हमारे पास 14.34 आ गया। चलिए जी, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम 7.1। अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम 7-2 पे। ये नेक्स्ट पेज पे गिवन है हमारे पास प्रॉब्लम 7-2। इसमें अगेन हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो और फिक्स चार्ज कवरेज रेशो कैलकुलेट करना है। तो पहले हम बात करते हैं टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो, ठीक है। अब टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो उसके बाद अगर हम देखें वो इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है, हमें रेवेन्यू गिवन है, रेवेन्यू के बाद कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस गिवन थे हमें, कॉस्ट ऑफ रेंटल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग और टोटल कॉस्ट एक्सपेंस। ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास आ गई 708, अदर इनकम आ गई, अदर डिडक्शन, और ये डिडक्शंस कौन सी हुई है, हमारी इंटरेस्ट की डिडक्शन हुई है। और हमारे पास आ गया इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस विच इज 675। तो ये 675 क्या है, ये इनकम बिफोर इनकम टैक्स है, और हमें क्या चाहिए, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हम अगर इस 675 में ये जो हमने इंटरेस्ट लेस किया है 60 लेस करने के बाद हमारे पास 675 आए हैं, तो हम इस 675 में 60 को अगर ऐड बैक कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो EBIT को कैलकुलेट करते हैं और वो हमारे पास क्या आ जाती है, इनकम बिफोर इनकम टैक्सेस में हम क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट को। तो इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितना है हमारे पास 675, और इसमें हम ऐड करेंगे 60 को, तो ये हमारे पास 735 क्या आ जाता है, EBIT। तो जब हम इस रेशियो को कैलकुलेट करने लगेंगे तो EBIT हमारे पास कितना हो गया 735, और इसको हम डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस पे। इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 60 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारे पास आ जाता है टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो विच इज 12.25। ठीक है, टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो हमने कैलकुलेट कर ली। सेकंड पे हमारे पास क्या हमने कैलकुलेट करना है, फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो हमने कैलकुलेट करना है। मैं इसको
यहाँ कैलकुलेट कर लेती हूँ ताकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी हमारे सामने रहे और उसका सॉल्यूशन भी। फिक्स चार्ज कवरेज रेशो। अब फिक्स चार्ज कवरेज रेशो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि फिक्स चार्ज कवरेज रेशो में जिस तरीके से हम टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो कैलकुलेट करते हैं वैसे, लेकिन एक चीज का डिफरेंस है और वो क्या, जिसे हम डिनोमिनेटर में भी ऐड करेंगे और न्यूमरेटर में भी ऐड करेंगे, और वो हमारा होता है इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ रेंटल्स। तो इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ रेंटल्स को हम टाइम इंटरेस्ट अर्न के फार्मूला में डिनोमिनेटर में भी ऐड करेंगे और न्यूमरेटर में भी ऐड करेंगे। तो EBIT के साथ हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ रेंटल्स, क्योंकि ये इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ रेंटल्स क्या है, ये भी हमारा फिक्स्ड चार्जेस हैं, हमारे फिक्स्ड एक्सपेंस है। जिस तरीके से हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ रेंटल्स ये भी हमारा फिक्स्ड चार्जेस में आता है। तो हम जब फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम EBIT में ऐड करेंगे इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ रेंटल्स को, और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे किस पे, इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ रेंटल्स। ठीक है, चलें जी, अब हम इसके जो है वो पहली वैल्यू वन बाय वन कैलकुलेट कर लेते हैं। EBIT हमने कैलकुलेट की और वो हमारे पास कितनी थी, 735। इस 735 में हमें इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ रेंटल्स ऐड करना है। अब अगर हम इस नोट में देखें, हमें क्या गिवन है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें गिवन है, ऑपरेटिंग लीज पेमेंट अमाउंट $150 हमें गिवन है, एंड preferred dividend 50. Assume that 1/3 of operating lease payment is for interest. 1/3 of operating lease payment. अब ऑपरेटिंग लीज पेमेंट्स है कितनी, 150। तो हम क्या करेंगे, इस 150 का 1/3 कैलकुलेट करेंगे और वो 1/3 हमारा इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ रेंटल कंसीडर होगा। तो इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ रेंटल्स कितना आया हमारे पास, 150 का 1/3। तो हम 150 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। अब उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ रेंटल्स। चलें जी, हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने हैं, 60, और उसके साथ क्या हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 60 प्लस 50 विच इज इक्वल टू 110। और इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ जाता है, 735 प्लस 50, 735 प्लस 50 करेंगे तो 785 हमारे पास आ गया EBIT प्लस इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ रेंटल्स। तो हम इन्हीं अमाउंट्स को फार्मूला में पुट कर देंगे, 785 डिवाइडेड बाय 110। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो आ जाएगी विच इज इक्वल टू 7.14 टाइम्स। तो ये हमने फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो कैलकुलेट कर ली। चलें जी, अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम 7-3 पे। यस, अब इस प्रॉब्लम 7-3 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें अगेन टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो कैलकुलेट करनी है और फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो हमें क्या चाहिए, EBIT चाहिए। तो अगर हम EBIT देखें तो वो हमारे पास एज इट इज गिवन नहीं है, लेकिन इनकम बिफोर इनकम टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्जेस गिवन है। तो जिस तरीके से हमने प्रॉब्लम 7-2 में किया कि इनकम बिफोर टैक्स में हमने इंटरेस्ट को ऐड बैक किया, तो बिल्कुल हम यहीं पे ऐसे ही करेंगे। तो हमारे पास EBIT किसके इक्वल आ गई, 36, और इसमें हम ऐड बैक करेंगे इंटरेस्ट को, 36 प्लस 16, और इसको हम डिवाइड करेंगे किस पे, इंटरेस्ट पे विच इज 16। तो ये हमारे पास टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो आ जाता है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 3.25 टाइम्स। ये हमने कैलकुलेट कर लिया टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो। उसके बाद हम आते हैं फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो पे, और फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, EBIT। तो EBIT में हम ऐड करते हैं इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ रेंटल्स को। EBIT हमने ये कैलकुलेट किया, 36 प्लस 16
36 प्लस 16 52 है, तो हम यहाँ पे 52 लिख लेते हैं। 52 में हमें क्या ऐड करना है? इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ रेंटल्स। अब अगेन हमें क्या गिवन है? अज्यूम दैट 1/3 ऑफ ऑपरेटिंग लीज पेमेंट इज फॉर इंटरेस्ट। 1/3 ऑफ ऑपरेटिंग लीज पेमेंट। ऑपरेटिंग लीज पेमेंट टोटल कितनी है? 150। तो इसका 1/3 हमारा इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ रेंटल्स होगा। तो 150 का 1/3 50, और इसको हमने डिवाइड किस पे करना है? इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो कितना है हमारे पास 16, प्लस रेंट इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ रेंटल्स विच इज 50। तो हम इस तरीके से हमारे पास फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो आ जाएगी, और वो हमारे पास पहले तो हम कर लेते हैं 52 प्लस 50, तो ये हमारे पास आ जाता है 102। इसको हमने डिवाइड करना है किस पे? 50 प्लस 16 66 पे। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 102 डिवाइडेड बाय 66 1.54 टाइम्स। ये हमारे पास फिक्स चार्ज कवरेज रेशो आ गया। थैंक यू। Assalamu alaikum, dear students. Today we will solve problem 4 and 5 of chapter number 7. These problems are taken from Financial Reporting and Analysis 12th edition by Mr. Charles Gibson. Let's start with the problem number 4. Here we are given with the balance sheet, and we need to compute the debt ratio. We need to compute the debt to equity ratio. And third one is compute the ratio of total debt to tangible net worth, and then comment on the amount of debt. Let's start with the computation of debt ratio. Debt ratio. All right, first of all, we need to write the formula to calculate the debt ratio, which is equal to total debt divided by total assets. As we are given with the total liabilities, here it is 1,74,979, 1,74,979, and we will divide it with the total assets. And here you can see in the asset section, the total assets are given 4,24,201, and when we divide the total debt with the total assets, 41.2%. So the debt ratio is 41.2%. And the second requirement is to compute the debt to equity ratio. The B is debt to equity ratio. Its formula is total debt divided by total shareholders equity. The debt value is same as in the debt ratio, 1,74,979 divided by total shareholders equity. Total shareholders equity 2,49,222 we will put here, and then debt to equity ratio is equal to 70.2%. The next thing that we need to compute is the ratio of total debt to tangible net worth. The third one is total debt to tangible net worth, which is equal to total debt divided by tangible net worth. Here, first of all, we need to calculate the tangible net worth. As we know, tangible net worth is equal to shareholders equity minus intangibles. These intangibles may include goodwill, trademark, patents, copyright, etc. So here, first of all, we will calculate the tangible net worth. The total shareholder equity is 2,49,222. We need to deduct the intangible. So if we see in asset section, we have some intangibles.
Here it is, 2,324. We need to deduct these intangibles from shareholder equity. Then we will get the tangible net worth, which is equal to 2,46,898. We will use this amount to calculate the total debt to tangible net worth ratio. So the total debt is equal to 1,74,979. We will divide with this value, which is equal to 70.9%. In the fourth point, we need to comment on the amount of debt. So if we look at the debt to equity ratio and total debt to tangible net worth ratio, so we can see that the debt is more than 70% if we compare it with the equity and the tangible net worth. And when we look at the debt ratio, which is equal to 41.2%, it shows that this company has financed over 41% of its asset by the use of debt. It was all about the problem number 4. Let's we move toward the problem. Here it is. A number of transactions are given here, and we need to indicate the effect of each transaction on these financial ratios. And these financial ratios are time interest earned ratio, debt to equity ratio, and debt to tangible net worth ratio. So before moving towards the analysis of each transaction, let me first write the formulas of these financial ratios. As we know, time interest earned ratio is equal to earning before interest and taxes divided by interest expense. Debt ratio can be computed as total debt or total liabilities divided by total assets. The debt to equity ratio can be computed as total debt or total liabilities divided by total shareholder equity. And debt to tangible net worth ratio can be computed as total debt divided by tangible net worth. And as we know, tangible net worth can be computed as shareholder equity minus intangibles. So here I will explain time interest earned ratio in very detail. As I said that time interest earned ratio is equal to earning before interest and taxes divided by interest expense. So we can say that there could be increase in time interest earned ratio due to 2 reasons. So the increase in time interest earned ratio due to it may be due to the increase in earning before interest and taxes, or it may be due to the decrease in interest expense. All right. And in contrast, there could be decrease in time interest earned ratio. It may be due to decrease in earning before interest and taxes,
or it may be due to increase in interest expense. So these are the reasons due to which the time interest earned ratio can be increased or decreased. So here you can see that EBIT is what? EBIT is numerator in this ratio and interest expense is the denominator in this ratio. So I can summarize increase in any ratio may be due to the increase in EBIT is what? It is the numerator. And secondly, the increase in ratio may be due to the decrease in interest expense is what? It is the denominator. Likewise, the decrease in any ratio could be because of decrease in EBIT, which is numerator, or it may be due to increase in interest expense, which is denominator. So if we use this rule, then we can easily we can easily indicate the impact of each transaction on the financial ratios. So let me put this rule at top, and we will use these rules to indicate the impact of each transaction. The first transaction is purchase of buildings financed by mortgage. So this transaction will result in increase. Purchase of building shows the increase in fixed asset, but on the other side it is financed by the mortgage. It means that our debt will be increased and also our interest expense will also get increased and total debt will also get increased. So interest expense, in first ratio, interest expense is the denominator, and when there is increase in the denominator, then our ratio get decreased. So our EBIT ratio will get decreased. And we said that due to this transaction, our total debt will get increased. So total debt is the numerator, and when there is increase in numerator, then the ratio get also increased. So this ratio will get increased. In the third ratio, debt is again the numerator, so this ratio will also get increased, and same in the fourth ratio. Next we move toward the second transaction, which is the purchase of inventory on short-term loan at 1% over prime rate. So basically our inventory is getting increased, but on the other side our debt are getting increased and our interest expense is also getting increased. So this transaction will affect same as the first transaction, that our time interest earned ratio will get decreased because our interest expense are getting increased and our total debt are getting increased. So our debt ratio will also get increased, debt to equity ratio will also get increased, and debt to tangible net worth ratio will also get increased. The next ratio is the next transaction is declaration and payment of cash dividend. It is the cash dividend. So when we declare and pay the cash dividend, then there is an effect on the total assets and there is effect on the shareholder equity. But in time interest earned ratio, this transaction will not affect this ratio. So we put the 0 here, that shows that there is no effect of this transaction on time interest earned ratio. But when we see that total debt divided by total assets, so due to the payment of cash dividend, our cash is getting decreased, our total assets are getting decreased. So total asset is the denominator of this ratio, and when there is decrease in the denominator, then our this ratio will get increased. And on the opposite side,
our retained earning will also get decreased, and due to the decrease in the retained earning, total shareholder equity will also get decreased. So when total shareholder equity is getting decreased, then it is the denominator, and when there is decrease in the denominator, then ratio get increased, and same with the fourth ratio, because tangible net worth is equal to shareholder equity minus intangibles. So the denominator, there will be a decrease in the denominator, that's why this ratio get increased. The next one is declaration and payment of stock dividend. All right, now it is about the stock dividend, not the cash dividend. Again, this transaction will not affect the time interest earned ratio, but this transaction affect the stock dividend. So what happened, that stock dividend declaration and payment of stock dividend. So our retained earning will get decreased and our common equity will get increased. So in nutshell, there will not any effect on shareholder equity, and there will also not no any effect on the total asset. So this transaction will not affect our debt ratio, and it will also not affect our debt to equity ratio, and also not affect our debt to tangible net worth ratio. These all four ratios will remain same as before this transaction. Next, we move towards the next transaction, which is about firm increases profit by cutting cost of sales. Our cost of sales are getting increased, and the cost of sales, we are cutting our cost of sales and our profit are getting increased. And when our profit will get increased, then it will result in increase in earning before interest and taxes, EBIT, earning before interest and taxes, which is the numerator of in this ratio. So when there is increase in the numerator, then this ratio get increased. All right. And on the other side, when our EBIT get increased, then ultimately our net income get increased, and the increase in net income will result in increase in retained earning, and ultimately it will result in increase in shareholder equity. And as we know that total assets must be equal to sum of liabilities and shareholder equity. So when there is increase in shareholder equity, so we can say that total assets get increased, and when there is an increase in denominator, then what happened, our ratio get decreased, and same will happen with the third ratio and the fourth ratio. Next is about the appropriation of retained earning. This is the transaction which does not affect any of the ratio. Next is the sale of common stock. So what happened when we sell our common stock? So it increase our assets, but it does not affect our time interest earned ratio. So there will not any effect on the time interest earned ratio of this transaction. But what happened? The sale of common stock. When we sell our common stock, then our common equity get increased. So also there will be an increase in our total assets and the shareholder equity. So increase in total asset mean the increase in the denominator, and when there is increase in denominator, the ratio get decreased. So there will be negative sign. And same with the third ratio, that sale of common stock results in the increase in shareholder equity, which is denominator. So this ratio will get decreased, and same with the fourth one. Next is the repayment of long-term bank loan. So when we have repaid our long-term bank loan, it means that our interest expense get decreased, and when there is decrease in the interest expense, it means decrease in the denominator, and when there is decrease in the denominator, the ratio get increased. So here we'll put the plus sign.
Next, what happened, that we have repaid our long-term bank loan. It means our total debt are decreased. So when there is decrease in the numerator, when there is decrease in the total debt get decreased, and when there is decrease in the numerator, then our ratio get decreased, so there will be minus. And in next ratio, total debt is the numerator which is getting decreased, so decrease in the numerator results in decrease in ratio, and same with the fourth one. And next, what happened, conversion of bond to common stock outstanding. This transaction will have the same effect as the previous one, that we have converted the bonds basically which are our long-term debt, and when we have converted our bonds to the common stock outstanding, it means that we have there is a decrease in our long-term liabilities, and when there is long-term decrease in long-term liabilities, it means our interest expense will also get decreased. So the decrease in the denominator results in increase in the ratio, and on the other side our debt can also get decreased. So total debt is the numerator, and when there is decrease in numerator, then ratio also get decreased. Same with the debt to equity ratio, and same with the debt to tangible net worth ratio. All right, and it's about the last transaction, the sale of inventory at greater than cost. And when we sell our inventory at greater than cost, then it affect our earnings. So our earning before interest and taxes get increased. EBIT is the numerator in the time interest earned ratio, and when there is increase in the numerator, then the ratio get increased. All right, and what happened with the other one, that our debt ratio get decreased, debt to equity ratio also get decreased, and our tangible net worth debt to tangible net worth ratio also get decreased. The reason is that when we are selling our inventory at greater than cost, it means we are generating our earning, so it affect our retained earning. That retained earning get increased, and due to the increase in retained earning, there is increase in the equity. So when there is increase in the equity which is denominator, so increase in denominator results in decrease in ratio. That's why our debt to equity ratio will get decreased, and our debt to tangible net worth ratio will also get decreased, as our total asset must be equal to the sum of debt and shareholder equity. That's why that shows that our total assets are getting increased, and when there is an increase in total asset, which is the increase in the denominator, increase in denominator shows the decrease in the ratio. That's why the debt ratio is getting decreased. So it was all about the solution of the problem 7-5. Thank you so much.